दिस हेयर कीप्स कमिंग यार, दिस ये ना ये फ्रिंज के बाल हैं और ये कटे नहीं हैं, तो मैं इसे कैंची लेके ये आपने खुद किया है? मैं कुछ करती रहती हूँ, बट सो इट्स लाइक व्हेन यू डूइंग अ फ्रिंज ऐसे कुछ रह जाता है, तो जब आप उसको बार-बार लाइक व्हेन यू आर गेटिंग इट सॉर्टेड तो आपको फिर वो बीच में आते हैं, फिर आप कैंची लेके उसको काटते हैं। तो New piece of information that I've learned today on the Bombay Journey. Yeah, but I think all the girls are used to this. लड़कों की तो मतलब कोई जरूरत ही नहीं होती, but Hi Kirti, how are you? I'm very good, Siddharth. How are Welcome you? to the Bombay Journey. अच्छा, अभी हम लोग हैं मलाड में और द बॉम्बे जर्नी की खासियत ये है कि अगर आप बम्बई में चल रही हैं तो आप ना कुछ भी एरिया पे अगर आपको कोई मेमोरी याद आती है तो इमीडिएटली कहानी रोक के आप वो पहले बोल सकती हो। Oh, okay. ठीक है? I just shifted here actually in April. Oh, you're not Maladkar? I've come a long way. This is the joke I've been preparing for in my head for some time. I've come a long way in my life. I was born in Colaba and I've reached Malad. Wait, what is this whole thing about Junjuna? Lovely joke. झुंझुना नहीं है by the way. फिर क्या है? झुंझुनू. झुंझुना is that toy, you know. हाँ, तो झुंझुना की वजह से मुझे शायद ऐसा लगा कि झुंझुना, बट अभी आपकी मलाड में ज्यादा कहानियां हैं कि उस तरफ ज्यादा कहानियां हैं, ये बताओ। Actually, I've never lived in Malad. It's my first time. Oh shit. But that's fine. So what do you call the memory I do have is there's Hamla there, ना मलाड जाते हैं, मलाड बोल रही हूँ, मड आइलैंड जाते हैं यहाँ से, and Hamla is a naval base. Correct. So my dad was in the navy. Yes. So I have been to Hamla. Oh yes, in fact Hamla I have this amazing memory of I was in 12th standard and I used to play badminton. Okay, I was in a Kendriya Vidyalaya. Yes. ये सब मेरी क्वेश्चन और रिसर्च की आप ही बात कर रही हो, तो मेरे को टेंशन नहीं है। मतलब मेरे 3 क्वेश्चन आपने एक उसमें एनकैप्सुलेट कर दिए। वेरी नाइस, थैंक यू, प्लीज। मैं बैडमिंटन खेलती थी फ्रॉम 2nd स्टैंडर्ड एंड आई वाज वेरी गुड एट इट। और मैं मतलब केवीएस के ना वो होते हैं ना रीजनल, जोनल्स, नेशनल्स, तो मैं नेशनल्स लाइक आई हैव गॉन 4 times, आई हैव बीन फॉर एसजीएफआई ट्वाइस। वेरी नाइस। So I was very good at it. In 12th May, I remember we came to play at Hamla at the first level. I used to live in Karanja, and बहुत मजा आया यार. Like of course I love badminton and मतलब schools में ना वो जो meets होते हैं, you know how fun they are. So this is cluster level, like the first level, and then you go up. सबसे पहले से चालू करते हैं जर्नी के हिसाब से. तो झुंझुन से आप हो. झुंझुनू से आप हो. So my district happens to be Junjunu. ठीक है. I am born and brought up in Bombay, in Colaba. So then राजस्थान वाली कहानी बहुत true है, ऐसे नहीं कि बनाई हुई है मैंने just to. So जो हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, तो गर्मी की छुट्टी मतलब you have to be in Rajasthan in May, June. The heat, I can't tell you. Oh my God. Yeah, so that's why I'm also very, very comfortable in Rajasthan, in the village. I have done all those things of पानी भर के लाना कुएं से. I mean, I remember a time when there was no electricity. Yeah, I've done all of that. And shepherds used to come with their bakris and bhed and all that, and we would catch them in the middle of the afternoon. क्योंकि हम बच्चे सोते तो नहीं थे दोपहर को, and all the adults had to catch their, you know, nap, little afternoon nap. और हम लोग यहाँ वहाँ कर रहे होते थे. गर्मी में हम बकरियाँ पकड़ के उसका दूध निकालते थे. And we used to make chai for my दादी, like बकरी के दूध की चाय. So cool. This is the Bombay Journey और हम लोग इन्फिनिटी मॉल पे हैं. हम लोग कैसे एनिमल हस्बेंड्री करते हैं इस बारे में बातें कर रहे हैं. अगर आपको दूध निकालने के बारे में this sounds only so. नहीं, just basic animal husbandry. हमारा देश का कितना पब्लिक करता है. I know, but like I know. अभी इसका मतलब आप इसको कहीं और लेके जाओगे. मैं नहीं लेके जाऊंगी. I can totally see it coming with the people. हाँ जी, देखिए ऑडियंसेस, आप लोग देश की धरती सोना हम लोग सिर्फ वही मीम हमें गलत मत समझिएगा. Yes. But तो फिर आप बॉम्बे guys, we're on the back road of Malad, which is these back roads I think are the most beautiful parts of Bombay, especially the south नहीं, especially the north Bombay. Correct. Because यहीं पे आपको खाली सड़कें मिलती हैं, आपको यहाँ बड़ी सारी शूटिंग भी होती हैं. बहुत सारी shootings भी होती हैं. I think I'm shooting here tomorrow or something. What? Yes. So much fun. You can run and come. It's the J sequence. I don't have मतलब to run. workout pre-workout भी हो जाएगा. नहीं, मैं pre-workout के लिए मेरे पास बचेगा नहीं कुछ, अगर मुझे पूरे दिन भागना है तो. So yeah, I think it's a beautiful area and पूरे बॉम्बे की वर्ली से लेकर भयंदर तक, मीरा रोड तक you should have back roads.
है ना, बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी हो आप और सिनेमा में नहीं आना था, नेवल की वजह से क्या फैमिली में डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड वो सब चलता था क्या, मतलब was there a certain kind of... So my dad's a very he's not your, वो जो दिखाते ना पिक्चरों में एकदम ऐसे आर्मी टाइप्स और मतलब ऐसे सब सीटी मार के सब कुछ हो रहा है, लाइन में खड़े कर रहे हैं, nothing like that. My dad I think was a very chill. Yeah, so my dad comes from my village. I mean, he's somebody who did his 12th in गाँव में, and then he joined the navy and stuff. So he has really like come from there and come to wherever he is, and so dad was very easy on all of us. We have four really? kids. We have four kids. Yeah, हम लोग 3 You're the sisters youngest? and the youngest daughter. And I have a younger brother. Okay. And my being born also was a big story. No. Because my dadi and somewhere even my parents wanted a son now, because दो daughters हो गई थी, and that whole idea of having a son and all of that. So literally when I was born, my dadi came to Bombay for my mom's delivery. एंड तब तो ये सब मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होते थे, हमारे घर में फ़ोन भी नहीं होता था. सही बात है. सो जब ये हुआ एंड माई डैड केम एंड टोल्ड दादी इन द मॉर्निंग दैट इट्स अनदर डॉटर, एंड माई दादी फेंटेड. Oh shit. Yeah, I'm not kidding. And even till today, I pull her leg and I'm like, what? अब मैं इतनी बड़ी बन गई हूँ, अब तो देख लो. No. So now I'm a favorite and I've been her favorite for a while. But I keep pulling her leg in terms of क्या था? क्या, you know, but it is such a, so when I was younger, I used to take this story very personally and be like, oh my god, I was born and दादी को मतलब चक्कर वक्कर आ गया and all that. But उसके बाद I started fucking around with it. हम बॉम्बे जर्नी में ना मुंबई की बड़ी बातें करते हैं. तो मुंबई का खाना कौन सा पसंद है? बड़ा पाव यार. Best. Yeah, and I actually love pani puri also. Yeah. Vada pav, pani puri, I love samosa paws also. I love our जो ये I love street food by the way. So जो ये अपने सारे वो लगते हैं ना डोसे I love dabeli. I love, dude. Oh my god, the sandwiches. Yes. The sandwiches that we get. Sandwiches, dabeli, the dosa wala, the pav bhaji, the idli walas. I mean, I love all of it. मेरा जनरली इससे बाद फॉलो अप क्वेश्चन होता है कि मतलब कहाँ का, बट आई रियलाइज ये तो पूरे शहर का. ये तो पूरे शहर में. पूरे शहर का. But I have someone behind my house for तो आपने वो रेकी कर ली है? हाँ, मैं खा चुकी हूँ. 2 बार खा चुकी हूँ. बहुत अच्छा अगर चाहिए तो टोयोटा शोरूम के पास रात को लगता है 10 से. ओ यार, वहाँ पे तो पूरी लेन है ना. So what? अब हो गई खाओगे. कुछ भी खा लो. अरे बेहतरीन. Yeah. बेहतरीन. Even the chai, dude, nowhere you find chai as good as your Bombay ka cutting chai. Yes. They get it right, man. Like the doodh and the chini ka, doodh and the pani ka combination. Otherwise, I mean, I'm not मुझे milky tea पसंद नहीं है. नहीं तो उसका नाम है. क्या? तो लंबा पानी is ज़्यादा पानी. पानी कम is पानी कम. Oh really? कटिंग उसका तो लंबा पानी कटिंग, पानी कम कटिंग, ये बोल सकते हो आप. Oh really? And then you'll be like sorted. Oh wow. ये देखो ये पूरा ये पूरा सब यही सब तो है यहाँ से लाइन से लगा रहता है वहाँ तक. I love all that. The sandwiches also they make us so tasty. Mumbai sandwiches something else. Something else. मुंबई की language, anything that you like particularly, भाषा, words, slang. I love Mumbai language यार. I think it's so cool. ऐसा क्या? ऐसा क्या? हाँ. बस क्या कैसा है? कैसे है तू? हाँ, कैसे है तू? मैं मस्त है. अभी क्या चल रहा है? और यार तुम बोलते हैं. तुम कैसी है? तुम कैसी है? हाँ. Nice यार. You got like हाँ. मेरे को आते हैं सब. मैं ऐसे बात करने लगे आप बोले कि कौन है भाई, काती किधर से उठा के लेके आए. Cool यार. But slang, कोई गाली जो यहाँ की आपको पसंद हो? Tell me some options. मतलब मैं तो फिर गाली देने लगा. हाँ तो बोलो ना. हाँ मतलब तुझा आयला. हाँ तुझा आयला. जमाइला इज फ्रॉम हैरा फेरी, वो बहुत पॉपुलर हो गया भाई ने बोला बोल के. बट ऐसा गवात इज बेसिकली ऐसा गवात बेसिकली व्हेन यू डोंट वांट टू से ऐसा व्हाटएवर, मेरी माँ की गाली नहीं देनी आपको, तो आप सिर्फ ऐसा गवात बोल दो, तो विच इज बेसिकली तेरी माँ के गाँव में. तेरी माँ के गाँव. Okay. तो लाइसा गो आई डोंट नो दिस, बट मैं भी अपने मराठी दोस्त को अगर कोई गाली देता तो मैं पूछता भाई मेरे को पहला बता दे. मैं रास्ते में जाके बोल देगा, मेरे को पड़ेगी. What else? तो आपकी कौन सी फेवरेट है इनमें से, और इज इट जस्ट लाइक अ बेसिक? So I end up saying bencho
quite a bit. हाँ. Like ऐसे मतलब ऐसे किसी को जोर से नहीं बोलती मैं. हाँ. Yeah, बहनचोद comes to me quite easy. चूतिया तो anyway. I don't even know if चूतिया is like considered. डिक्शनरी में है. हमारी हिंदी डिक्शनरी में चूतिया का अर्थ है मूर्ख. Really? मूर्ख. Really? हाँ जी. When did this happen? अरे हमेशा से लाल वाली किताब रहती थी घर पे. उसमें चूतिया है चा में. Oh, really? और नहीं तो क्या. Oh. I'm not making any of this up. But I can pretty much speak all the galis. हाँ. Yeah. There was a point. I've grown up in a family where I have never heard my dad say anything beyond idiot. And I don't know if he has ever said bastard also. But I have never heard him give gali. So I was, my family mein matlab I grew up in a way which is like, gali to matlab ram. And then I would judge every guy who would give galis and I'm like, oh my god, you know, bahut gali deta hai. Not happening. And then I was doing a play, I remember, called Sakharam Binder. It's a Marathi play, yes. Vijay Tendulkar's very famous play. And that I was doing with Yatri group and I was playing this girl called Champa. And she's like this prostitute who he brings home and keeps her. Okay. You know, and Champa was like, uska to matlab shuru gali se hota tha, end gali se hota tha. And I remember when I was doing that play, when I was rehearsing for that play, I would say my line and jaise koi gali aati, I would stop. Because I just couldn't do it. And dude, for me, this is what, I mean, again, acting and training and, you know, theatre and everything is about. That how you break your inhibitions, right? Yeah. And doing that play, of course, I had to do what I had to do. And karte, I could give galis through the play. Nice. And that really opened me up, you know, as an actor. Yeah. Because one of the main things is आप inhibited हो ही नहीं सकते. You know, you should be naked. You should be able to be correct. Whatever, say whatever. You can't have your own ideas attached to it. Yeah. And I'm doing this film now called Naika, the new film. So Naika is a like the brand. No, Naika, like actress. Oh, like Naika, हाँ, like Nayak. हाँ, Naika. हाँ, so Naika, that Naika. So it's a dark comedy thriller, and उसमें तो मतलब jump hard. मतलब absolutely, like I remember हमारी workshop हो रही थी, like I was sitting with the director and I was literally like, so if you open the first page of my script now, I was so tempted to take a picture of it and put it on Instagram saying beginning something new. It had like galis written, मतलब so we were like, tell me more, like कुछ नया बताइए, कुछ नई गाली बताइए. I can't really say all of them here, but they were hilarious. Cinema is like a backup option, or it Cinema happened? was never an option, it just happened. And how did it happen? So I mean, school में you keep doing these co-curricular activities, right? इसमें participate. नहीं, theatre मैंने अभी किया है. Theatre मैंने after joining the industry किया है, because I wanted to learn. उससे पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था. मतलब acting was दूर तक कुछ नहीं होता था acting को लेकर. So you were saying extracurricular, sorry. Yeah, that's fine. But वही जो poem recitation, singing competition, ये सब जो schools में होते हैं ना competition. So I was a very shy kid actually. Till third standard. What are you saying? I was so introverted, dude. I was scared of people. If someone would come home, I would just not talk. I would not look at them. You know, I would just go into my room and I would. Yeah, you're doing those mannerisms also. I just saw. So, no, I'm just remembering also how I used to be. So it was actual. And then so people who know me today, they're like, how is it possible that you were an introverted kid? But I really was, and then I think something inside me just changed in third standard, and I started participating in a lot of, you know, these co-curricular activities. Badminton, of course, was happening on the side, and so my dad was one of those, you know, कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, okay, go and participate. I'm like, Dad, no. We used to be like, Papa, छोड़ो ना यार, please, बहुत हो गया. नहीं बेटा, go and participate. So, and I think that's a I really thank him for that when I look back, because that I think was kind of making the way for a lot that's probably happened to me today. So when I was in college here, third semester, I was doing my BMS, Bachelor's in Management Studies. Where did you go to do BMS? In Bhavan's College. Oh, right here? No, the town one. Town one. Bhavan's, yeah. Okay. So तब ना Navy का कुछ program हो रहा था, and Papa was like,
being Papa, beta, you have to participate. And I'm like, okay, Dad. So Gateway पे there was an event and I was doing. They made me be the MC for it. So my face was not seen. I was just comparing from behind. Comparing the whole thing. So All India Radio heard my voice and then they're like they wanted to test me for their show and I was like okay. मुझे कुछ नहीं पता था. Like that's what I'm saying. It was never even like I didn't even know this could lead to what and then that could lead to what. So I was just enjoying being a 17-year-old and doing this, getting this opportunity, doing what I can do with it. So वहाँ पे गई and then वहाँ से then बात went to films division. एक सेकंड तो आपने रेडियो किया है? नहीं मैंने किया नहीं. मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ but they called me for it. हाँ जी. So उसके but वहाँ से suddenly I get a call from films division for a woman oriented project that they are doing. Oh, wow. A Hindi film, a Hindi feature by this Oriya director, national award winner called Sushant Mishra. Okay. And they called me for that suddenly in my third semester and I'm like 17 and a half and I'm like it came to me suddenly and I literally left my third semester beach में and I took off to shoot for this film. So उस वक्त जो मेरा I think वो जो एक सामना हुआ या एक मिलना हुआ एक्टिंग से एज अ क्राफ्ट वो जो हुआ आई थिंक दैट just left me with a feeling of क्या नाम है पिक्चर का? It's called Dharini. It never came out. Okay. But the experience just stayed with me and it made me feel कि ये तो यार it's something that I really want to do, तो आपकी कोई ओशिवारा अंधेरी की कोई कहानी? अरे so I have lived in my first house that I was living in is Behram Bagh. अरे इधर ही है? हाँ, I had a left लेके right. one room kitchen there. And it was the first time I kind of moved here and I was 2007 when I started my journey. There's a what? Hair strand that you're trying to take away. This hair keeps coming this ये fringe के बाल हैं और ये कटे नहीं हैं तो मैं ऐसे कैंची लेके ये आपने खुद किया है? मैं कुछ करती रहती हूँ but so it's like when you're doing a fringe ऐसे कुछ रह जाता है तो जब आप उसको बार-बार like when you are getting it sorted तो आपको फिर वो बीच में आते हैं फिर आप कैंची लेके उसको काटते हैं तो New piece of information that I've learned today on the Bombay Journey. Yeah, but I think all the girls are used to this. लड़कों की तो मतलब कोई जरूरत ही नहीं होती but yeah. नहीं देखो भाई fringe का ना I mean at least I know my friends have two kinds of opinions with a fringe haircut. Some either fully love it and they're like, whoa, crazy. Yeah. And then there's the other kind. Yeah. So in general, India is not a big fan of fringes. Yeah, no? Yeah. It's a very cultural thing. Yeah, but in Asia, right? अपने आसपास वाली public पागल है. They are crazy. So we are still, Color your hair also yourself? No. ये मैं आपको बोलने वाला था जब आप घुस रही थी कि I love the color and I love the way it's come out because it's a tricky color to pop. No, I can't do it myself. Yeah, but red is a tricky color ना when you do it कभी दिखता नहीं है unless sun गिरता है. Honestly, इसमें I have about 4-5 colors that were put. It's like an ombre of the pink kinds. It's like when you see my original color, it's like fire. वो जो होली के colors होते हैं ना, वो orange, pink, dark pink, purple वो जो होते हैं बिल्कुल वैसा था वो. By the way, I'm coloring it to purple in the next 3 days now. all my hair. So, wow. So as an actress especially, आपका एक बहुत limited दायरा होता है. आपको ऐसा दिखना है, आपके बाल, just again the idea of a fringe or doing something a little funky and crazy with your hair. It's not your Bollywood idea. तो आप उसमें जीते हैं because अच्छा कभी भी कुछ भी मिल सकता है उसके लिए तो मुझे एकदम सिंपल बाल चाहिए like black बाल या dark brown बाल या जो भी है and that long hair and that whatever that thing is. So I have spent enough time staying in that daira, okay, and I love experimenting with hair in terms of cuts, in terms of colors. And just last year I was like, I mean I've colored it before, but वही आप थोड़े डरे से रहते हो कि अभी 2 महीना है कुछ करना है तो कर लो उसके बाद तो you have to change it to whatever. But for the first time I'm like, you know what, I'm gonna do my thing. सही बात है. Because ये नहीं होगा कि अरे मेरे एक्टिंग करियर खत्म होगा उसके बाद कीर्ति जीना शुरू करेगी. No, Kirti is living simultaneously. That's a part of my life. This is a part of my life, and I don't want to postpone anymore. And we'll see यार. I'll work around it. कुछ ना कुछ निकल जाएगा and very cool. चीजें संभल जाएंगी. So I'm doing all of that.
तो हम ओडिया फिल्म पे थे। ओडिया फिल्म नहीं थी, वो हिंदी फिल्म थी। अच्छा, हिंदी फिल्म थी, ओडिया डायरेक्टर थे। यस। आप फिर उसके बाद क्या की? उसके बाद मैं कुछ नहीं की। उसके बाद मैंने पढ़ाई खत्म की। उसके बाद मैं कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं कॉलेज गई। सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद। हाँ। उसके बाद मैंने कॉलेज खत्म की, मेरा ग्रेजुएशन खत्म किया। उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम भी किया। किधर से? विद्या विहार, केजी सोमाया। अरे वाह भाई। Because my dad was posted at Chembur that time, so I finished that. And उसके बाद मैंने 2007 में ये जो कॉन्वर्जेशन किया, उसके बाद फिर मैंने जनवरी में शुरुआत की एड फिल्म से। Because मुझे नहीं पता था कि कैसे करते हैं, you know, like what is the way. और दो तीन वेज होती थी मेरे ख्याल से। एक तो या तो आप मॉडल बन जाओ, मॉडल इन टर्म्स ऑफ फैशन मॉडल, रैंप वॉक्स एंड ऑल दैट। फिर आपके पैजेंट्स हो जाएंगे, और फिर आप एड फिल्म्स कर लो, यू नो, काइंड ऑफ अ थिंग। सो मैंने एड फिल्म चूज किया एंड इट वेंट ऑफ वेरी वेल फॉर मी। आई वाज आई एम द क्विंटेसेंशियल TVC face, you know, like selling Colgate. Selling everything. Colgate, affable face, skin cream, I can trust you. Lovely hair, you know, I can sell all of that. So washing machines and refrigerators and everything. So yeah, so I did that and it was very successful. It was very successful and but मुझे हमेशा ये था कि तो मतलब उसे कॉन्फिडेंस मिल जाता है ना कि अगर आपकी ऑडिशन हो रही है, सिलेक्शन हो रहा है, फिर ऐड आ रही है। हाँ, मतलब that means you are कहीं आगे बढ़ रहे हो। So for me, when I said 2 साल दो मेरे पेरेंट्स को, this was a big thing. I'm like, तो ये 6 months हो गया था? अरे मतलब मुझे तो पहले एक हफ्ते में मुझे मेरा फर्स्ट असाइनमेंट मिल गया था। वाओ। हाँ, so I was doing very well in ads. लेकिन मुझे ना मुझे एक्टिंग करनी थी, मुझे फिल्मों में एक्टिंग करनी थी, और फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए मुझे एक्टिंग सीखनी ज़रूरी थी। अच्छा। बिकॉज आई डिडंट वांट टू फूल माई सेल्फ इनटू बिलीविंग कि ओ मैं तो यू नो आई एम अ मॉडल एंड TVCs एंड एड्स कैन, यू नो, मैं तो कर सकती हूँ। नहीं, आप मतलब एड्स डोंट टीच यू हाउ टू एक्ट। ओके, सो आई स्टार्टेड। कितनी ऐड की थी आपने? आई थिंक आई हैव डन अबाउट 50 एड्स। That's quite बहुत होता है, एंड वेरी गुड ब्रांड्स। एंड सो मैंने बहुत थिएटर किया, और मैं बहुत खुश थी थिएटर करके। मतलब मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। यू नो, ऐसा कहा जाता है एक्टिंग के बारे में कि आपको एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता। आप सीख सकते हो, लेकिन somebody can't teach you. So it really depends on who you are. हाँ, and what are you able to take from it, you know, and how are you able to kind of work on it. So बहुत मज़ा आया, 1 साल बहुत थिएटर किया। उसके बाद भी मैंने थिएटर किया, बट सीखा। आई थिंक बहुत मेरे जो बेसिक्स हैं एक्टिंग के, फंडामेंटल्स हैं, वो मेरे थिएटर से लेके। और जब भी इन माय करियर मैं काम ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, कमर्शियल काम या यू नो फिल्में नहीं मिल रही हैं, तो मैं थिएटर करती थी। I would take up a play. I would be doing it for 3-4 months because I was like, I want to work on my craft. Because मुझे हमेशा ये था कि जब भी कुछ होगा मेरी लाइफ में, जब भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, my craft is what is going to get you change wherever. things. Yeah. You know, so I was always working on that, and that's exactly what happened. I think, yeah. I mean, if you look at me today, I'm here, sitting here, talking to you, or you know, wherever I am. It's because people have taken notice of my acting skills. But पहली पिक्चर कब आती है ये बताओ ना, मतलब this all leads up to that moment. तो वो मैं समझ So खिचड़ी, I remember 2009, I got a call for auditioning for Shaitan and खिचड़ी together, like almost 2 दिन के गैप में मैंने दोनों के लिए टेस्ट किया, और मुझे दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया. Correct. And I almost was at a point where I had to decide कि खिचड़ी करनी है, शैतान करनी है, because the dates were clashing. And it so worked out that शैतान got pushed almost by a year. Yes. So मैंने खिचड़ी आराम से ख़त्म की. वो जब रिलीज़ हुई अक्टूबर में 2010 में, then शैतान शुरू हुई right after that. Correct. And then शैतान released in 2011 June. So and Shaitan became a cult film. Shaitan became something else, yeah. It was, but having said that, Khichdi, I'll tell you, I mean, Khichdi mein of course, I was playing Parminder and all of that. But those were the actors, मतलब उनका तो कब से चलता आ रहा था, right? And मेरा इतना कुछ नहीं था फिल्म में.
बट आई कांट टेल यू कि मैंने खिचड़ी थिएटर में 10 बार देखी है. मैंने कोई फिल्म ऐसे 10 बार नहीं देखी है. ओके, एंड प्योरली बिकॉज जस्ट वॉचिंग दैट फिल्म विद एन ऑडियंस. और मतलब वो जिन जोक्स पे हंसते हैं, जो हंसते, I used to just sit there and just wait for their reactions and housefuls पे housefuls. That's also cult ना, मतलब. हाँ, वो भी अपने आप में एक वही थी. हाँ, बट शैतान उसका एक वो था. या नहीं, वो खिचड़ी तो बहुत पॉपुलर है यार. इसका मतलब पागलपन है खिचड़ी का तो. And Pink is quite later, quite after. Pink is quite later, yeah. Pink, I think Pink तक तो I was almost. Pink और Hindu Sarkar, all of these are much after. So Pink onwards is all of this. Pink, Hindu Sarkar, Blackmail. Then it's the rest of the FOMO shot, Uri, Mission Mangal, FOMO shots. Yeah, so then there is a Sailab in the last 6 years of in the last, yeah. So things changed after Pink a lot. तो basically 2011 से 16 में क्या क्या हुआ ये बता दो संक्षेप में. बहुत सारा प्लेस हुए. मैंने 3 प्लेस किए आई थिंक उस टाइम पे, और बहुत मजा आया. बहुत कुछ सीखा और जद्दोजहद चली in terms of just dealing with your own shit, in terms of your personal life also, in terms of relationships, in terms of professionally. I mean, I was doing work. Of course, I was running a house and I was kind of earning well. पैसे का टेंशन नहीं था. पैसे का नहीं था, but at one point work was almost zero. And so I remember shifting back with my parents in Colaba. Okay. I was also in a relationship then, which was I think propelled me to kind of take a step back from my work and stuff like that. But I had. So I asked I was living on my parents' money and I was living with them in Colaba towards the end of my dad's career. And I don't think I had problems with that because I think that's how family work, no? Families work. आपके पास है, you take care of me. When I have, I take care of you. So उसमें शायद I see a lot of kids, going like, अरे but मैं पापा से पैसे कैसे मांगूं, मम्मी से कैसे मांगूं, I don't like them taking care of me, this and that. And I'm like, it's okay, dude. When you have it, you take care of them. When you don't have it, let them take care of you. मतलब उसमें हर चीज में नहीं बात इस पे आ सकती. So they took care of me, and then I kind of I think. Then I met Sahil in 2014 and I shifted back here this side. I mean, my dad retired, so we shifted back to Palm Court actually. Goregaon. Matlab nahi, Malad. Malad only. Yeah. So that happened, and then slowly I started getting back to work, and then again doing theatre. And then Pink happened in 2016. I mean, I finished shooting for Pink in March 2016. How was that? Like, बच्चन साहब के साथ आप काम कर रहे हो? Dude, that was that was pagalpan. Like you. So हमें जब when I tested for it, and तब मुझे पता था कि 3 लड़कियों की कहानी है. मुझे इतना ही बताया गया था. And Shujit was a part. Shujit Sarkar was producing it and all of that. I said must be something. कुछ तो होगा that Shujit Sarkar has kind of said yes to it. And then हमें बाद में रिवील किया गया. So the lawyer is being played by Mr. Bachchan, and I was like, what the fuck? It's like, yeah, it's like, when do you think of this? All those lead here. Yeah. ये चीजें आपने सोची भी नहीं होती हैं. So when someone is dreaming, वो भी अपने दायरे में ही ड्रीम करता है ना. मतलब औकात में ड्रीम करता है ना वो कि हाँ चलो ठीक है मतलब इतना ही सोचते हैं. इससे ऊपर सोचने का दिमाग क्या करता है. एंड स्पेशली इंडियंस को तो ये बीमारी है कि मतलब वो बहुत दायरा बहुत बड़ी चीज होती है. हाँ. सो पिंक में तो आपका एक डायलॉग भी है जो पैसे लिए हैं. नहीं, वो बालकनी वाला क्या फर्क पड़ता है, चल अंदर चला, ऐसे वाला जो कुछ एक है लाइन, दिस bras and panties hanging or something, and then somebody's trying to cover it up and you come out. I am not that guy कि जो मैं ऐसा बड़ा लोगों का डायलॉग बड़ी डायलॉग्स पकड़ूंगा. मेरे को वो छोटा ones, जो छोटे सीन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, तो मैं भी भूल गई हूँ. हल्की सी लाइन में निकल जाती है. Even I love that. I know what you mean, and I think as an actor, people remember usually अरे वो सीन, अरे ये कौन सी लाइन है जो आप बोलने वाली थी जो बहुत फेमस है, जिन आपको बहुत नहीं, वो तो सीन that's the scene ना, the court scene where I say पैसे लिए हैं, so what, like what is that? वो तो डायरेक्टर ने और राइटर ने ही लिखी थी वैसे कि मतलब ये तो फाड़ लाइन है. हाँ मतलब हाँ, ऑन पेपर ही आपको पता है कि ये तो yeah, it was meant to be seen like that. So but yeah, it's these smaller things here and there which is also what I look for as when I'm watching an actor on screen, and I'm like, and even just that one expression, and sometimes you're like, oh my god, like
you got it. Like you just killed it, you know. Correct. So, Pink Hindu Sarkar, all Pink of Hindu this. Sarkar, Blackmail. Blackmail, mein you worked with Irfan bhai. Huh. So I mean, what is that? Yeah. What is that like a story? I've always heard great stuff about his. I mean, proceed. he's again, like I mean, same when I got Blackmail and Irfan Khan was in it, and I was like, wow, That you is know. also a comedy only. It's a comedy. Dark comedy. It's a dark comedy. It's a comedy. Yeah, exactly. But people, I don't know, maybe that. And your character is also like this frivolous one, na? Matlab. Yeah, exactly. So that's what I'm saying. It's when the people ask me such questions, and I'm like FOMO shots also. There's a lot of comedy in it, dude. Yeah. Like there's a lot of humor in it. So when people still say this, and I'm like, okay, I don't know. Maybe I'm supposed to be in like a BV number 1 or hero number. I think that's what they are expecting me to do. हाँ भाई थोड़ी गोविंदा टाइप की कॉमेडी करो. हाँ तो ये तब लगे सटल नहीं समझ आता हमें. हाँ यार हटाओ. यार ये जो आपका ह्यूमन आपने जो सीरीज किया उसका मैंने ट्रेलर देखा था. मेरी थोड़ी फटी यार क्योंकि the times that we are living in human trials हुए ना. तो मतलब and my producer said यार देख लेना ये क्वेश्चन थोड़ा सा weird है क्योंकि I felt मेकिंग लाइक कंटेजियन आई थी पेंडेमिक से पहले और लोगों ने बोला था कंटेजियन मत देखना वो सच है भाई सब सच है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन देख के भी मेरे को थोड़ा डर लगता है मतलब इट्स द स्कैरी व्हिच इज द ट्रू मीन स्कैरी एंड यू हैव दिस लाइक very strong character very like it's almost I don't want to spoil it for them also it's okay most of the people have seen it बता दिया है तो हाँ थोड़ा duality वाला जोन आ जाता है ना मतलब कैरेक्टर को करना क्या चाह रही है टाइप वाला जोन तो एक तो ये बता दो कि ऐसा डर या थ्रिल या हॉरर आपके लिए भी था when you were reading when you're doing it and then once it has come out what do you have to say यार मुझे तो I mean of course the subject that it is हमने ह्यूमन ट्रायल्स के बारे में ऐसा इट्स नॉट अ टेबल कॉन्वर्सेशन की बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं मतलब मैंने नहीं की है मैंने कभी सुनी भी नहीं है तो मेरे लिए तो मतलब ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग रेवलेशन इन टर्म्स ऑफ व्हेन आई एम लाइक ओह ओके like really and whenever I see a script on something as you know as controversial or something as big as this one of my first questions is ये सच में होता है क्या or is it just a story you know and then when you're told नहीं ऐसा होता है you know and then it just leaves you very very shocked but for me that shock is a very of course I'm amazed at I am also amazed at but I'm also no more really surprised at what we humans are capable of True. You know, मतलब मैं हमेशा ये मानती हूँ कि reality is stranger than fiction. I mean, trust me, like the kind of stories you hear and जो आपके चारों ओर होता है आपको तो पता भी नहीं है बहुत चीज़ें and then when you see something on the screen and you go like अरे ऐसे थोड़ी ना होता ये तो बहुत exaggerate किया है तो बहुत over दिखा रहे हैं मतलब हम लोग सच में उसको sugar coat करके दिखाते हैं यार because the reality is something that's sometimes too harsh it's sometimes too harsh. I'm not somebody who likes to live in my little bubble of ignorance. Correct. कि मेरे को इतना पता है मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ मुझे मत बताओ ज्यादा यू नो आई एम समबडी हु इज लाइक I want to know all the sides. हाँ कुछ नया तो लेके हाँ and then I want to as a person and then I want to choose how I want to deal with that information right so like truth of any kind doesn't make me uncomfortable and I think whatever makes you uncomfortable is something you need to look at right I also play a homosexual in the closeted homosexual in the show so for me exploring that part was also very very interesting I have doctors in my family my sister is a doctor so मतलब मेरे लिए it became about a new world a new character something new to explore like even homosexuality I've never played a part like that before and I was like I want to represent it, you know. I want to represent this now. I'm ready for it, and I met like psychiatrists and you know all of that. I spoke about people, people from LGBTQ community and you know what are their problems like, what are their challenges. I spoke to friends around me who are from the community and you know even Moses, my director. So I got so much insight into their world and for me
this is what it is. So ये जो 6 साल का जो सैलाब है उसमें PR करने की जरूरत नहीं पड़ रही ना अब? कर रही हूँ यार, बीच बीच में उठाती रहती हूँ. हाँ, मतलब जैसे मैंने लास्ट ईयर आई मीन आई टेक इट फॉर चंक्स एंड ऐसे मुझे ना PR जो मेरे लोग हैं, दे वेरी स्वीट एंड दे सिट मी डाउन एंड दे आर लाइक, see Kirti, we understand you are this person, that person, but listen, you have to do it, you just have to do it. And I'm like, but why? But आप सोशल मीडिया तो ढंग का करती रहती हो कुछ. मैं Instagram पे I have started enjoying using Instagram, तो मैं वो उस पे कर लेती हूँ. But आजकल उसी से बहुत कुछ हो जाता है, like it just travels too far. And like one thing that every PR tells you, Kirti, can we please do spotting? I'm like, no. Kirti, please, just like, you know, airport, just this, and they can just spot you where you're going for work. I said, no. I don't want to do spotting. Like, I don't want to be, you know, I don't understand this concept, man. And I'm like, मैं नहीं करा सकती भाई, मुझे नहीं दिखना है. नहीं, वो वैसे वाला एक मीम आया था ना, क्या two-horned rhino है क्या, जो spotted होएगा. Exactly. So then sometimes they go like, I'm like, see, मैं अभी तुम्हारे साथ 2 महीने के लिए करूँगी, but मैं नहीं करूँगी. You know, so spotting is something that मैं अभी तक ऐसा मेरा. हाँ, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, आप पहुँच जाओ. No, I mean, they really, my PR have a tough time with me, but that's just what it is. I think I find it very unnecessary. But ये 6 साल में especially appreciation आया, उससे तो अच्छा लगता है यार. वो तो बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब appreciation आया है, एक अच्छी credibility हो गई as an actor, अच्छा काम मिल रहा है, तो मतलब I'll be stupid to say कि नहीं थोड़ा ऐसा कभी-कभी दुख होता है कि of course it's amazing. Yes. Of course. So how did you like this? Very nice, huh? Fun, no? Yeah. Thank you so much for being on the Bombay Journey. Thank you, Siddharth. Thank you so much. It was great fun. Yeah.